Today is the time for third part of chapter 5. Now I am going to teach you about the method by which we separate insoluble substances from liquid. These methods are sedimentation, decantation and filtration. Decantation always followed by sedimentation. Then first sedimentation. The process of settling down of heavier insoluble solid particles from a mixture is called sedimentation. For sedimentation, we have to take 2 beakers, glass rod, sand and water. We need to make a mixture of sand and water. For that, we take some sand in a beaker and pour some water in it. पहले एक बीकर में थोड़ा सैंड लेके उसके साथ पानी मिलाकर सैंड और वाटर का एक मिक्सचर बनाना है. देन स्टर इट वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड और फिर कुछ देर के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है. आफ्टर सम टाइम you will observe that the heavier particles of sand start settling down at the bottom and forming a sediment. The clear liquid above the sediment is known as supernatant. We can see different landforms due to sedimentation. This process is also used in water purification. After sedimentation, we pour clear water into another beaker without disturbing the sediment with the help of a glass rod. This process is known as decantation. Sedimentation के बाद सेडिमेंट को डिस्टर्ब ना करते हुए सुपरनेटेंट को दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं. इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है. इन दिस वे अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर has been separated. We use this method in our everyday life. When rice and pulses are washed with water before cooking, then the water is separated from them by decantation. We know that two immiscible liquids form separate layers. इस immiscible liquids को decantation से अलग कर सकते हैं. Another simple method for removing suspended impurities from the liquid is filtration. सबके घरों में हर रोज़ कई बार करके चाय बनते हैं, है ना? चाय बनाने के बाद अगर डायरेक्ट कप में चाय डालते हैं तो टी के साथ टी लीव्स भी मिक्स हो जाता है, जिसको हम लोग नहीं पी सकते. चाय पत्ती के साथ कोई चाय नहीं पीता है. फिर कोई सॉल्यूशन निकालना है ना, ताकि हम लोग चाय से लीव्स को अलग कर सकें. टू गेट टी वी शुड यूज़ अ स्ट्रेनर. व्हेन वी पोर टी थ्रू अ स्ट्रेनर, टी गेट्स कलेक्टेड इन अ कप एंड टी लीव्स रिमेन इन स्ट्रेनर. चाय पत्ती स्ट्रेनर के ऊपर रह जाता है. दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सीविंग. लाइक स्ट्रेनर फॉर फिल्ट्रेशन, we can also use cotton clothes or filter paper. Take another example of filtration by using filter paper. At first, a filter paper is folded in a form of a cone. This folded filter paper is fixed onto a funnel. Now take a mixture of sand and water and pour on the filter paper. Solid particles of mixture do not pass through the filter paper and remain on paper, and this impurity is known as residue, and the liquid easily pass through it and gets separated from the solid particles. This clear liquid is known as filtrate. फिल्टर पेपर के जो होल होते हैं वो बहुत छोटा छोटा होता है. इससे सिर्फ लिक्विड पास हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल्स नहीं. सॉलिड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है. इस तरह से इम्प्योरिटीज़ को अलग करके हम लोग क्लियर लिक्विड पा सकते हैं.
नाउ फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ फिल्ट्रेशन। हमारे एवरीडे लाइफ में फिल्ट्रेशन बहुत यूज़ होता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन थ्रू किडनी टू प्यूरिफाई ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर थ्रू लंग्स, filtration of tea, filtration of juice, purification of water in water filter at our home, and water treatment plants. Okay, next I am explaining you about third group, that is separation of soluble solids from liquid. For this we should follow two methods, that is evaporation and condensation. कंडेंसेशन फॉलोड बाय एवापोरेशन। कंडेंसेशन हमेशा एवापोरेशन के बाद होता है। फर्स्ट इज एवापोरेशन। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एवापोरेशन। दिस मेथड is used to obtain a solid substance that has dissolved in water. Let's do an experiment. Here is a beaker of salty water. What will happen if we boil the solution for a long time? Salt और water का solution बना के जब boil करना start करेंगे तो evaporation यानी भाप निकलना शुरू होता है, जो हम लोग रोज़ देखते हैं चाय बनाते वक्त या पानी गर्म करते वक्त। और अगर थोड़ा ज़्यादा समय तक बॉयल करते हैं तो क्या होगा? You will observe when the whole water gets converted into vapor, only salt remain at the bottom. The vapor are cooled to form water which gets collected into another beaker. The process of conversion of vapor into liquid is called condensation. वेपर को ठंडा करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। इन दिस वे वी कैन सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। वी यूज दिस मेथड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। बेसिकली सी वाटर इज कैप्चर्ड इन शैलो पीट्स। द सनलाइट हीट द वाटर एंड स्लोली वाटर गेट्स इवापोरेटेड। सी वाटर को शैलो पीट में कैप्चर किया जाता है और वैसे ही कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। सन के हीट से वाटर इवापोरेट होते रहता है। आफ्टर कंप्लीट इवापोरेशन ऑफ वाटर वी गेट सॉल्ट फ्री फ्रॉम वाटर। इट इज़ देन फर्दर प्यूरिफाइड टू बी यूज्ड इन अ फूड एज अ कॉमन सॉल्ट। Formation of cloud is another example of evaporation and condensation. In this method, water bodies get evaporated by sun's heat, and when it rises up, it gets condensed due to the low temperature. Now I hope you understand all the methods properly. Now, separation of mixtures using more than one method. Very often, pure substances are obtained by using a combination of different methods for separation. कुछ मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, a mixture of sand, water, salt and iron fillings can be separated by different methods such as magnet to remove iron fillings, filtration to remove sand, and evaporation to remove salt from water. For this experiment, we need sand, salt, iron fillings, magnet and water. At first, we mix sand, salt and iron fillings. ये तीनों चीज़ों को सबसे पहले बीकर में लेके अच्छे से मिक्स करना है। Then we will bring a magnet in front of the mixture. All the iron fillings will get separated by getting attracted to magnet. मैग्नेट से अट्रैक्टेड होके सारा आयरन फिलिंग सबसे पहले अलग हो जाएगा। Then add some water and stir it very well with the help of a glass rod. Now filter this mixture
into a conical flask using a filter paper. Sand is insoluble substances and bigger in size remain on the filter paper as residue. सैंड डिजॉल्व नहीं होता है और इसका पार्टिकल्स भी बड़ा है, इस वजह से फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है और मिक्सचर से अलग भी हो जाता है. नाउ वी हैव टू हीट दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट until the water evaporates completely. The water gets evaporated leaving behind the salt. वाटर इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट रह जाता है. In this way we can separate the salt from water. Okay, clear?